So guys, for most of us, IIT was the dream. Okay, engineering was not our dream. IIT was the dream. यार वो tag मिल जाए, वो अपना poster पे नाम आ जाए कि I've cracked IIT. We knew nothing about engineering world. We did not know what branches are there in engineering. Mechanical क्या होता है, civil क्या होता है, electronics क्या होता है, electrical electronics में फर्क क्या है, कुछ पता नहीं था. A lot of you will be repeating the same mistake again as you made in engineering. And I wanted to make this point about what mistakes you can probably make. And hello everyone, welcome back to my channel, all sorted, and welcome to another honest talk. This honest talk will also be coming from my heart. I recently watched a documentary of sorts called Alma Matters on Netflix, and trust me, वापस सब दोहरा गया engineering का days. I did my engineering from NIT, and I could relate to that documentary a lot. And I thought, why not make a video on the reality check in life of MBA and comparing the parallels of MBA and engineering, and how few of you can avoid that, because I know most of you will again make the same choices going by the society, hearing about what is best. So let me tell you about what I feel is the truth about life of MBA and the life of engineering, comparing both the worlds. Let's see guys. Okay, we just wanted to grab that tag of IIT. Now in case of MBA, let's come to this. We just want that tag of IIM. Okay, passed out from an IIM, and we think we are branded for life. Is that the reality? देखते हैं, जानते हैं, पूरा वीडियो देखना. Okay, जो भी बात बोलूँगा, there is nothing scripted here. जो भी बोलूँगा experience और दिल से बोलूँगा. I did my engineering from NIT, so I can talk a lot from my friends' experiences and my experience. So अपना ड्रीम था IIT जाने का. We did not know about anything about the branches. So we took mining, we took geophysics, we took pharmacy. B Farm होता है IIT BHU में. कुछ IITs में अलग अलग branches, mining, अरे जो मिल रहा है ले लो. Documentary में भी it has shown the same thing, that students are choosing branches, कोई भी branch they do not know A, B, C, D about, just because they are getting it from an IIT. Alright, ठीक है. Now let's come to IIM. बेबी IIM मिल रहा है, न्यू IIM मिल रहा है, बेबी का बेबी IIM मिल रहा है, कुछ पता नहीं है. बस जाके टैग लेना है, भाई IIM से किया है, और बस लिंक्डइन पे आ जाएगा MBA फ्रॉम IIM, तो मजा आ जाएगा. राइट, सो यू कैन ड्रॉ द पैरेलल्स कि वही बेवकूफी रनिंग बिहाइंड द टैग हो रहा है. ओके, लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2 ऑफ प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट्स में क्या होता है? इंजीनियरिंग का बात बता रहा हूँ. देयर आर वेरी लेस कोर जॉब्स. सेकेंड ईयर में आता है वी गेट इन टू लर्न द कोर सब्जेक्ट्स. अरे ये तो बहुत ही बकवास है. आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू इलेक्ट्रिकल. यार दिस इज नॉट माई थिंग. आई एम नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट्स. मेरा तो किसी और में इंटरेस्ट था, ये मैंने कौन सी ब्रांच चूज कर ली. बट नाउ यू हैव टू स्टिक टू इट फॉर अनदर 3 years टिल योर फाइनल ईयर. बट फाइनल ईयर में पता चलता है कि प्लेसमेंट्स आर ओनली फॉर कोडिंग जॉब्स, डेटा जॉब्स. दिस इज द रियलिटी शोन इन दैट डॉक्यूमेंट्री. इफ यू हैवंट, प्लीज गो एंड चेक. डेटा और कोडिंग जॉब्स है. अरे अभी ये जॉब लेना पड़ेगा तो कौन सा स्किल सीखना पड़ेगा? मैं माइनिंग में हूँ, आई एम इन जियोफिजिक्स, आई एम इन मेटालर्जी, बट नाउ आई हैव टू लर्न कोडिंग. सी सीखो, C++, डेटा साइंस, पाइथन. नहीं आ रहा है फिर भी सीखो. थर्ड ईयर में चालू हो गए, बिकॉज वी अल्टीमेटली वांटेड टू ग्रैब दैट प्लेसमेंट. एंड देयर इज सो मच प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी दैट यू आर फ्रॉम एन एलीट कॉलेज, इतना तो पैकेज लगना ही चाहिए. And that keeps on running in our minds कि इतना पैकेज लगने के लिए I have to get a data job, coding job, then only I can grab a 12 lakh, 15 lakhs का package. As Simon Sinek says that stress is when you are working hard for something you do not like. When you're working hard for something you do not like, you get stress. And no wonder there are so many stressed students in engineering institutes, the premier ones also. So that's my point, कि stress may ultimately we somehow grab a job and just do that. Let's come to the MBA world. Finance, operations, analytics, HR, IT, इसके बारे में कुछ पता नहीं है. एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग बहुत कम पता है तो भी now you are somewhat mature, you might have heard it somewhere, but very surface level knowledge you have. But you want to go to an MBA, यार देख लेंगे फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा. फर्स्ट ईयर में जो कर रहे हैं सब कर लेंगे, और इलेक्टिव्स जान के आई थिंक वो हो जाएगा. फाइनल प्लेसमेंट उसी दौरान, तो फाइनल प्लेसमेंट भी उसी में ले लूंगा. Is that the reality? Let's find out. Summer placements में क्या होता है? 60 to 70%. This is for generally all the colleges I'm talking about. 60 to 70% summer internships are in the marketing and sales domain. Okay, even if you are a finance enthusiast, आपको पता था कि यार
आपको फर्स्ट ईयर के बाद समझा यार मुझे तो फाइनेंस पसंद आ रहा है, मुझे तो एचआर में थोड़ा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, पीपल आई एम पीपल्स पर्सन, मार्केटिंग एचआर में इंटरेस्ट है, पर एचआर में तो अभी नहीं आप जा पाओगे, ऑपरेशंस में अब नहीं जा पाओगे, सप्लाई चेन छोड़ दो. It is happening because you got an summer internship in marketing and sales. There is huge chance that final placements में also you'll get shortlist in the same thing. All right. So हो क्या रहा है, आपको फाइनेंस करना था, आपको ऑपरेशंस करना था, सप्लाई चेन एचआर करना था, बट यू आर नाउ एरिया सेल्स मैनेजर और यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग. सो अगेन व्हाट इज देयर, व्हाट जो आपको मिल रहा है, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड सेइंग यार लाइफ तो फ्लो में जानी चाहिए, सब लोग ऐसा ही करते हैं तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है. बट ट्रस्ट मी, आई स्टिल फाइंड पीपल पासिंग आउट फ्रॉम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIMs, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि यार क्या करना था, मैंने कौन सी ब्रांच ले ली, यार फाइनेंस में जाना था, अभी तो एरिया सेल्स मार्केटिंग में हूँ और मतलब मजा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बट किए जा रहे हैं क्योंकि उतना लोन भी सर पे है 20-25 लाख का, यू कैन नॉट स्विच जॉब्स वेरी इजीली. सो सेम थिंग, मिसअलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मिसअलाइनमेंट ऑफ योर जॉब. कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, वेरी हार्श रियलिटी, suicides at IITs, NITs, engineering institutes and suicides in the premier MBA colleges. हर साल की बात है. इन माई बैच ऑल्सो देयर वर 2 suicides. There's why, क्यों हो रहा है? There might be many possible reasons, but what I can gain, there is a lot of pressure, there is a lot of stress because you are working hard for something which you do not like inherently. क्योंकि बस आपको एक रैट रेस में दौड़ना है. यू हैव टू ग्रैब अ प्लेसमेंट टू शो दैट टू योर पेरेंट्स, टू द सोसाइटी. यार आपका फ्रेंड का 12 लाख का 15 लाख का पैकेज लगेगा तो आपको 15 लाख या कम से कम 12 तो चाहिए नहीं, तो क्या मैं उसके साथ कैसा लगेगा आपको. These all things run through our minds in engineering, and somehow there's lot of stress, lot of anxiety. No doubt there are so many depressed students also. Lack of mingling with the outside world. You are surrounded in that limited zone. Especially IIT खड़गपुर की बात हो रही है तो इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि वो कैंपस ही उनका लाइफ था. They did not know anything about the outside world, but somehow internet has opened doors for us now. That is a blessing. You can actually research about the world. Now let's draw a parallel to MBA. MBA में भी क्या हो रहा है, 20-25 लाख का आपने लोन उठाया, 15 से 20 से 25 लाख का इज एवरेज फीस नाउ ऑफ द कॉलेजेस. नाउ यू आर मिसअलाइंड टू अ जॉब, आपको करना पड़ रहा है घिसा पिटा क्योंकि आपको वो लोन चुकाना है. ओके, आप इजीली जॉब स्विच नहीं कर सकते हो बिकॉज नाउ यू आर इन दैट जोन कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगेगी 27-28 में. सो इट्स नॉट वेरी पॉसिबल टू स्विच जॉब्स वेरी इजीली. सो इट वॉज आस्क्ड इन IIM अहमदाबाद, हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, ऑलमोस्ट 90% ने हाथ उठाए, हाँ मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे स्टार्टअप करना है. What does the data show? Hardly 10% of the people from IIMs go for startups. Reason being, so the topmost reason that people are not going for entrepreneurship is because of the huge debt they have. 20-25 लाख का लोन आपके सर पे, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, यू डू नॉट हैव अ ह्यूज बैकअप प्लान. आपका बाप बहुत कोई रईस नहीं है तो आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाओगे यार. वो 25 लाख का लोन आपको 30 लाख जब तक चुकाओगे तब आपका माइंड फ्री होगा, तब जाके आप यू कैन टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड तब जाके यू गेट अराउंड एज ऑफ 28, 30, 31 एंड तब जाके लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉप अप. यू माइट गेट मैरिड, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप सच में कर पाओगे स्टार्टअप? आई डोंट थिंक सो. तो होता क्या है फिर, बस नाउ यू थिंक दैट यू हैव टू रन इन दिस रैट रेस, कॉर्पोरेट लैडर में आगे बढ़ते जाओ, दैट इज द रूट फॉर सक्सेस, एंड आगे बढ़ते जाओ एंड वही लाइफ आप जी रहे हो. मिसअलाइनमेंट ऑफ प्रोफेशन. इकिगाई का कॉन्सेप्ट तो किसी को पता ही नहीं है. इकिगाई का कॉन्सेप्ट आपने, आई होप यू हैव रेड अबाउट इकिगाई कॉन्सेप्ट. इट सेज दैट यू कैन बी ट्रूली हैप्पी व्हेन यू आर वर्किंग इन दैट इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट यू लाइक, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर. ये 4 सर्कल्स का जब इंटरसेक्शन होता है, आप इस जोन में काम कर रहे हो, यू विल बी द मोस्ट पर्पसफुल, यू विल बी द मोस्ट हैप्पी. But होता क्या है, now you are better to answer yourself. Now many will say that no मुझे तो बस पैसे की जरूरत है, I just want a huge package and I'll be happy for my life. So if you are coming from a lower middle class background, I can understand that can be a big motivator for you. It is a big motivator for a lot of people. But do you think that will sustain for a long time? आपको एक बार चलो 3-4 साल आपने पैसा कमा लिया, but आपको inherently जॉब में मजा नहीं आ रहा है, will you be happy? Ask yourself that question, because engineering में तो ऐसा नहीं हुआ था, because you wanted some way out of engineering, तो MBA मिल गया था. अभी MBA भी कर लिया है, so what way will you find out? कहाँ जाओगे? So don't you think it is important to understand what interests you
and choose a specialization according to that. And don't fall into the trap of जो engineering में mistake किया था, we did not know about the branches and just randomly जो मिल गया उसमें चले गए. Do you want to repeat that same mistake? Because there are colleges which are niche colleges जो MBA provide करते हैं specializations में. अगर even if you are doing general management, go for general management at IIM. I'm not saying don't do general management, but be aware of the branches starting from the first year itself. अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो करो CFA लेवल, पहले से तैयार हो जाओ उसके लिए. अगर आपको HR में जाना है तो choose colleges like that. Because in my own batch in TIS Mumbai, I have seen people coming from IIM Kozhikode, IIM Bangalore, various IIMs, JB IIMs and whatnot. Similarly, I have seen people going to IIM Ranchi, leaving IIM Lucknow because IIM Ranchi का HR है, so they are going for IIM Ranchi HR. I know this year student who is doing that. So I somehow feel there are some people who are making informed choices. Make informed choices. थोड़ा information gather करो यार. Internet is open, LinkedIn is open. Connect to people, know about branches, know about specializations, know what interests you. Because I have personally gone through that engineering का phase. I had to do C++. I had to learn that in my third year. ज़बरदस्ती सीखो. And then I got a software job. Did it for 2 years. Did not like it much. And thought MBA is the way out. And it was a way out for me because I researched a lot. I did 3 internships. I found out my passion for marketing and HR. And I finally made my decision to choose HR, and I'm really happy I made that decision. Because that was an informed choice. Not somehow I was just pushed into it. And don't worry if अंदर से एक कोई specialization नहीं आ रहा है कि यार मुझे तो finance ही करना है, मुझे तो operations ही करना है. You can go in that elimination route also. कि ये नहीं करना है तो ये करेंगे. This is almost what we do as choices, almost how we choose in everyday life, isn't it? Netflix Prime पे आप कैसे मूवी सेलेक्ट करते हो कि ये नहीं देखना है, फिर हाँ चलो ये ठीक लग रहा है इसको देखते हैं, और वो आप मूवी देखते हो. हार्डली ऐसा कभी होता है कि मुझे एक मूवी देखनी है तो मैं Netflix पे जाऊंगा और वो मूवी देखूंगा. Mostly it is eliminating and then choosing the right option. Similarly, in multiple choice questions in CAT, for a lot of questions we do elimination and choosing the right option. This can be also applied to choosing specializations if you inherently do not know your interest area. कि आप एलिमिनेट करते जाओ, यार मुझे तो फाइनेंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ऑपरेशन छोड़ दो, बचा क्या है 3-4 फील्ड्स, अभी उसमें फिर थोड़ा सा और रिसर्च करो. दैट कैन बी वन वे. कनेक्टिंग टू पीपल ऑन LinkedIn कैन बी वन वे. Okay, and searching about what job profiles are offered, that can be another way. What is the job trajectory? What does that person do in their everyday life at the office? That can be one way. 85% of the people working in a job do not like their job. कितना बड़ा misalignment है, and that is one thing that spills over to your personal life because you spend 9 to 10 to 12 hours in office. Obviously if you are not enjoying that, आप frustrated हो तो वो spill over होगा आपकी personal life में भी, and आपका फिर सब खिचड़ी हो जाएगा life. Suggestion is that make an informed choice. Okay, I'm time and again I'm saying that don't repeat that mistake of engineering में randomly blindly कोई एक branch choose कर लिया and just because tag आपको अच्छा मिल रहा था. Because I personally know people coming from tier 2 engineering colleges doing excellent. They are in Microsoft, Google because they really wanted to do that. So guys, I hope this video helps you somehow. दिल से बात निकली, I hope दिल तक पहुंचेगी, and you draw everything which is positive message from my video. A lot of people will again make the same mistakes, but just make an informed choice is the message of this video. Don't go blindly after tags. There are specialized colleges which are better than the IIMs, trust me. Okay, research about that, which are the top non-IIM colleges specialized in some branches. If you are really if you really understood your passion, just go for the best fit college for the best branch. Okay, that will work wonders for you in the long run. You are someone कि यार मुझे तो कोई भी ब्रांच में डाल दो, मैं काम कर लूंगा और मैं खुश रह लूंगा और मैं आराम से 12 घंटे काम कर सकता हूँ, अगर मुझे वो काम पसंद नहीं है, then this video was not for you anyway. So you can skip the video or you can dislike and move ahead. But this was the video for the people who want to actually make a right choice now, who are going into details कि यार MBA तो करना है, पर सच में किस में करना है, आगे क्या फ्यूचर होगा मेरा. Some people who are actually going in depth and thinking about that, thinking about the future and thinking about their own happiness in the long term. This video was for them. So guys, I hope if you like this video, please like it, share it to your friends and hit all notifications. Stay tuned to All Sorted. Bye bye guys, I'll see you soon.